हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडिया एंड हर नेबरहुड। इस टॉपिक में हम चाइना, पाकिस्तान, मालदीव्स, कुछ कंट्रीज को हम डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जो बायलैटरल टाइज में जिन कंट्रीज को भी आज हम डिस्कस करेंगे उनको डिटेल में डिस्कस करके आपको बायलैटरल टाइज का एक आइडिया दे सकूं कि बायलैटरल टाइज हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व कैसे हुआ है, हमारे बायलैटरल टाइज में चैलेंजेस किस तरीके के हैं और उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हमने स्टेप्स क्या क्या लिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं साइनो इंडियन रिलेशन से। ये पूरा टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, क्योंकि मेंस के एग्जाम में जब व्हेन दे आस्क थीम बेस्ड क्वेश्चंस तो थीमेटिक एस्पेक्ट्स को टैकल करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास बायलैटरल टाइज की बहुत ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप अगर केवल इस चीज पर फोकस करेंगे कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है तो वो आपको दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दैट इज नॉट गोइंग टू सफाइस। You need to have very broader understanding of the bilateral ties, what has happened in the last couple of years, how has the relationship evolved over the period of time. So you also need to know a bit about the history. आपको जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साइनो इंडियन टाइज में आपको हिस्ट्री के बारे में ब्रीफली पता होना चाहिए कि हमारा जो बायलैटरल डिस्प्यूट है, जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, वो डिस्प्यूट्स कब शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स में अब तक हमने क्या स्टेप्स लिया है, बिकॉज दोज डिस्प्यूट्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ लास्ट 3-4-5 years। वो डिस्प्यूट बहुत लंबे समय से वो डिस्प्यूट चल रहे हैं। दोज डिस्प्यूट्स आर द रिजल्ट ऑफ what has happened in the last 50-60 odd years, what has happened since China, since Communist Party of China coming into power, तब से लेकर के और अब तक जो कुछ भी हुआ है वो बायलैटरल डिस्प्यूट उसका रिजल्ट है। तो अगर आपको लास्ट 2-3 years का डेवलपमेंट पता भी चल जाता है that what are the steps that have been taken by India and China to reduce conflict, to bring peace and stability along Sino-Indian border, to bring peace and tranquility along Sino-Indian border, तो भी आपको एक होलिस्टिक आइडिया नहीं पता चल पाएगा कि बेसिकली वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो क्यों रहा है। तो हम यहाँ पर साइनो इंडियन रिलेशंस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। स्लाइड्स की भी मैं हेल्प लूंगा कुछ बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, और कुछ बातें मैं आपके साथ इन जनरल भी डिस्कस करूंगा दैट हाउ हैज India's relationship with China evolved. So first, India-China relations. Remember that it is also known as Sino-Indian relations. So why do we call this bilateral ties as Sino-Indian relations? Sino is a Latin word which means China. So Sino-Indian relations it is also known as Sino-Indian relations, and it is also known as Indo-China relations. So we established diplomatic ties with China in 1950, and remember that Communist Party of China came into power in 1949. They are ruling China since 1949. It is a single party state. And then I have mentioned here that both countries, they also witnessed border dispute in 1962. And then relationship between India and China, it deteriorated to a great extent in coming decades. और relationship normalcy की तरफ कब move हुआ? Normalcy की तरफ move हुआ when राजीव गांधी witnessed China in 1988, और उसी समय ये बात हुई किस तरीके से बॉर्डर पर पीस, ट्रैंक्विलिटी और स्टेबिलिटी क्रिएट किया जा सकता है। एंड मैकेनिज्म नेम्ड एज जॉइंट वर्किंग ग्रुप came into existence. A joint working group mechanism between India and China came into existence during this phase. This joint working group was responsible for bringing peace and stability along Sino-Indian border. उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग mechanism आया दोनों कंट्री के बीच में in 2003 when Atal Bihari Vajpayee visited China, and a special representative mechanism it came into existence. आज जो बातचीत होती है चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट पे नेगोशिएशन होता है, दैट टेक्स प्लेस under the mechanism of
special representative mechanism that came into existence only in 2003. And then in 1992, Indian President R. Venkataraman visited China, and that was the first presidential visit to China from Indian side since the independence of Republic of India. Now remember that when we talk about China, this is our boundary with China. We share boundary with China, our 4 states share boundary with China and 1 union territories. Union territory of Leh and Ladakh, Union territory of Ladakh rather, Uttarakhand, Himachal Pradesh, then Sikkim and Arunachal Pradesh. And we share a boundary of 3,488 kilometers with China. हम चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री शेयर करते हैं. Now these are economy and trade, that our trade with China in this fiscal, in this financial year, by the end of March 2023, it is going to cross 125-130 billion dollars. Experts are saying that our trade with China, it has grown significantly. But the most concerning thing for India has been that this trade deficit, this trade is heavily in favor of China. There is huge trade imbalance in favor of China. ये हमारे लिए एक बड़ा challenge है. In fact, I mentioned here that in the first half of 2022, we had a trade of $67 billion with China. That is why I told you that at the end of March 2023, experts are saying that this trade is likely to cross 125, 130, maybe 140 billion dollars. But one major concern for India has been that we have a trade deficit with China, and this trade deficit is heavily tilted in favor of China. So they earn a lot from India. That is why India expects that they should keep on investing in Indian economy. But their investment in India in the form of FDI, it has been quite insignificant. Experts ये feel करते हैं कि शायद वो हमें इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर नहीं देखते हैं, बट रादर एक्सपर्ट्स ये फील करते हैं कि वो हमें रादर एक अट्रैक्टिव मार्केट के तौर पर देखते हैं एंड नॉट एज अ पार्टनर. नाउ कल्चरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना. Cultural relationship between India and China, it goes almost 1,000 years back. In fact, we had a cultural relationship with China due to a spread of Buddhism. Chinese scholars, they have also precisely mentioned Chinese philosopher Hu Shi. You can use the name of this Chinese philosopher in your answer as well. That he said that India conquered China culturally for 20 centuries without ever sending a soldier across its border, which symbolizes the rich history of cultural ties between the two countries. So cultural ties between the two countries, it goes thousands of years back mainly because of spread of Buddhism, and then Chinese visitors, they also used to come. In your history book, in school days, you must have heard about a lot of Chinese scholars in this regard. काफी सारे Chinese scholars के बारे में आपने सुना होगा. Now, recent development in Sino-Indian relations क्या हुआ है? So, a couple of recent developments have taken place between the two countries, that Indian Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping have met on a number of occasions in the past. Though after Galvan Valley clash, now the relationship is still tense, it is still not normal. But 2015 onwards, we had a number of meetings with each other, and that includes meetings like this Wuhan summit, जहाँ से COVID-19 का वायरस निकला था. पहली बारी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच में वुहान समिट हुआ था. उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच में मामलापुरम चेन्नई के पास एक जगह है, वहां पर दोनों के बीच में समिट हुआ था. बट आफ्टर गैल्वन वैली क्लैश, द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज इज स्टिल वेरी टेंस and it is not normal. And this has been accepted by Indian Foreign Minister as well. That recently Indian Foreign Minister said that India's relationship with China
is not normal. He accepted this point. He said that our relationship with China is not normal. And what happened on Sino-Indian border in 2020, that was a violation of the agreements on which both countries agreed in the past, that no conflict will take place. We will try to avoid conflict. So Chinese, they unilaterally tried to change the status quo of the border. Status quo at the border. Status quo मतलब जो कंडीशन था उस बॉर्डर को उन्होंने यूनिलेटरली उसके स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की. ये एक चैलेंज दोनों कंट्री के बीच में रहेगा रिलेशनशिप में. दैट इज व्हाई आई सेड दैट दिस relationship is not normal, it is tense, because Galvan Valley clash, it marks a end of a 45-year long duration that saw no armed confrontation involving the loss of lives on the line of actual control. You would be amazed to know कि आखिरी बारी जो हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था, वो वॉर इट हैपेंड इन 1967 in which loss of lives had happened. That happened in Sikkim sector, and during this war India gave a bloody nose to China, in which 400 in this confrontation 400 Chinese soldiers got killed. इस confrontation में almost 400 Chinese soldiers got killed. ये आखिरी वॉर था इंडिया और चाइना के बीच में 1967 में, और उसके बाद 2020 में गैल्वन वैली क्लैश हुआ है दोनों कंट्री के बीच में, which was very unfortunate, because even Indian Prime Minister on a number of occasions had reiterated that in the last 50 years not a single bullet has been fired on India-China border. लेकिन जो गैल्वन वैली में हुआ, that was wrong, and that is why relationship आज भी आपको दोनों कंट्री के बीच में बहुत नॉर्मल नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि 1967 के बाद पहली बार दोनों कंट्री के बीच में हम लॉस ऑफ लाइव्स देखते हैं. सो ऑलमोस्ट 55 years के बाद 67 and till 2020 it is almost what you call 53 years between the two countries जहां लॉस ऑफ लाइव्स विटनेस नहीं हुआ था. और एक बार लॉस ऑफ लाइव्स जब इस तरीके के कन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं तो उसका बड़ा रिपल इफेक्ट होता है. दोनों कंट्री के आर्मी के बीच में सस्पिशन बढ़ना शुरू होगा, and that conflict will become frequent. That's not a very good thing. That is why India's foreign minister said that relationship between India and China is not normal. In fact, relationship between India and China has deteriorated over the period of time. Then now historical underpinnings between the two countries. As I told you that we share boundaries with China in 4 sectors. In four states of India share boundary with China, and 1 union territories. 4 states are 1 Uttarakhand, Himachal Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh, and Ladakh sector. That is an Indian union territory that shares boundary with China. आपको एक और बात जान के हैरानी होगी that we in the past we never shared boundary with China directly. In fact, we used to share boundary with Tibet and not with China. But then in 1950-51 उन्होंने तिब्बत को एनेक्स किया, उन्होंने तिब्बत को इन्वेड किया, एनेक्स किया, and then we started sharing boundary with Tibet. अब यहाँ भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है that in 1954 it was advised to Indian Prime Minister that अगर आपको चाइना के पोजीशन को तिब्बत में एक्सेप्ट करना है, so you bargain with them and say that we will accept your position on Tibet, but you will have to accept our position on entire Sino-Indian border. Prime Minister of India said that Chinese Premier Zhou Enlai is a very good friend of mine and bargaining with him over Tibetan issue will not look good. Bargaining अगर हम Zhou Enlai के साथ करेंगे जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, and that is why he did not bargain. वैसे foreign policy में bargaining is an essential part. There is nothing wrong in bargaining with your friend, your neighbors. And then I have mentioned here that India and China had never shared a common boundary till China liberated or occupied Tibet. I will not call it liberation, rather the more apt word would be occupation of Tibet in 1950.
1950 में उन्होंने तिब्बत को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की एंड देन वहां से इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री थी ना, जो इंडिया की बाउंड्री तिब्बत के साथ हुआ करती थी, दैट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइनो इंडियन बाउंड्री, इनटू इंडिया एंड चाइना बाउंड्री। नाउ इन 1954 एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। 1954 से पहले तक चाइनीज मैप्स पूरे अक्साई चीन एरिया को, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख है, उसको वो इंडियन टेरिटरी के रूप में दिखाते थे। बट सडनली 1954 में उन्होंने इस पूरे एरिया को चाइनीज एरिया के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। नाउ दैट वाज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड दैट स्टार्टेड इन 1954। और उन्होंने ये कहा, क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि अक्साई चीन एरिया को कनेक्ट, अक्साई चीन एरिया चाइना के दो ट्रबल्ड प्रोविंसेस को कनेक्ट करता है, दैट इज तिब्बत को कनेक्ट करता है अक्साई चीन एरिया, और दूसरा सिंजियांग को कनेक्ट करता है। दीज टू आर ट्रबल्ड चाइनीज प्रोविंसेस जिसको कनेक्ट करने का काम वो करता है अक्साई चीन एरिया। अब यहां पर क्या है कि अक्साई चीन एरिया इकलौता रोड है जो मॉनसून और विंटर सीजन में भी ऑपरेटिव होता है, और ऑल्सो cheapest movement for goods and services in these two states. उन्होंने इस पर्टिकुलर रोड के स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को समझा, and that is why in 1954 they changed their stand and they started claiming entire Aksai Chin area in Jammu and Kashmir and also some areas of Uttarakhand and entire Arunachal Pradesh। और इस एपिसोड के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में मिलिट्री क्लैश बड़ा फ्रिक्वेंट हो गया, that resulted into the border war of 1962। Now after border war of 1962 एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस वॉर के बाद चाइनीज ने खुद से ही यूनिलेटरली सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, और सीज फायर डिक्लेयर करने के बाद चाइनीज ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ। जब चाइनीज ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ तो लाइन जो दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, द बाउंड्री दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, it came to be known as the line of actual control। Remember, the boundary after the war that came into existence, it came to be known as line of actual control। Now why do we call it line of actual control? Line of actual control signifies the position held by both the countries before the war of 1962। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिफरिंग कंसेप्शन है दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडिया का कहना है दैट वी शेयर अ बाउंड्री ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज एक्चुअली 3488 किलोमीटर। हिंदुस्तान का कहना है एज पर इंडिया, इंडिया के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज 3488 किलोमीटर लॉन्ग। चाइना के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज ओनली 2000 किलोमीटर लॉन्ग। उनके हिसाब से ये पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज ओनली 2000 किलोमीटर्स लॉन्ग। इसका मतलब है कि दोनों कंट्री के परसेप्शन में, लाइन ऑफ कंट्रोल को देखने के तरीके में, नजरिए में देयर इज अ डिफरेंस। सो अकॉर्डिंग टू चाइना, line of control is only 2000 kilometers long। According to India, line of control is 3488 kilometers long। इस बात को याद रखिएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है। 1962 वॉर से पहले जो पोजीशंस दोनों होल्ड करते थे, उसी पोजीशन को चाइना ने कहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब उस समय कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज नॉट सो वेल डेवलप्ड, टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो वेल डेवलप्ड, तो हमें यह पता भी नहीं है कि एक्चुअल पोजीशन किसका कहां पर होता था। और दोनों ही कंट्रीज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश में लगी रहती है। वी शेयर बाउंड्री विद चाइना मेनली इन 3 सेक्टर्स: वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में, एज आई टोल्ड यू दैट वेस्टर्न सेक्टर it consists of Aksai Chin area, which is the northeastern extension of Ladakh। क्या है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। It is the northeastern extension of Ladakh, western sector। It is a cold desert and also an uninhabited area। Western sector is a cold desert, it's an uninhabited area and it is the northeastern extension of Ladakh। इसका क्या सिग्निफिकेंस है?
जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जो अक्साई चीन एरिया है ये कनेक्ट करता है चाइना के दो डिस्टर्ब प्रोविंसेस को, नेमली सिंजियांग एंड तिब्बत, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो होता क्या है कि दोनों में जो मॉनसून और विंटर सीजन में इकलौता रोड ऑपरेटिव होता है दैट पासेस थ्रू अक्साई चीन, एंड इट इज ऑल्सो द चीपेस्ट रोड फॉर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। नाउ दिस एरिया हैज बीन इलीगली ऑक्यूपाइड बाय चाइना इन वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में चाइना डिमांड्स ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, तो इसीलिए यहां पर मैंने मेंशन किया है that in the western sector India shares about 2152 kilometer long border with China, and then ये पूरा का पूरा एरिया, यहां पर डिस्प्यूट किस चीज को लेकर है, यहां पर दो लाइन है। एक लाइन हम लोग बोलते हैं जॉनसन लाइन दैट वाज ड्रॉन इन 1865, और दूसरे लाइन को हम लोग बोलते हैं मैकडोनल्ड लाइन दैट वाज ड्रॉन इन 1893। जॉनसन लाइन एंड मैकडोनल्ड लाइन, क्या है जॉनसन लाइन और क्या है मैकडोनल्ड लाइन, वो थोड़ा समझिए। एज पर यहां पर लिखा हुआ है कि इन अक्साई चीन एरिया वी हैव अ जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन के हिसाब से अक्साई चीन एरिया इट बिलोंग्स टू इंडिया, एंड मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से इन 1893 वी हैड मैकडोनल्ड लाइन, उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा अक्साई चीन एरिया इट बिलोंग्स टू चाइना। देयर लाइज द प्रॉब्लम। मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से ये एरिया चाइनीज कंट्रोल में है, जॉनसन लाइन के हिसाब से ये एरिया इंडियन कंट्रोल में है। अब चाइनीज ऑब्वियसली मैकडोनल्ड लाइन को मानते हैं एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट जॉनसन लाइन, वो मैकडोनल्ड लाइन को मानने का काम करते हैं और जॉनसन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो इंडिया कंसीडर्स जॉनसन लाइन एज अ करेक्ट लाइन एंड चाइना कंसीडर्स मैकडोनल्ड लाइन एज अ करेक्ट लाइन। यही डिफरिंग परसेप्शन है दोनों कंट्री के बीच में। सबसे लीस्ट डिस्प्यूटेड एरिया दोनों के बीच में क्या है? लीस्ट डिस्प्यूटेड एरिया दोनों के बीच में मिडिल सेक्टर है। ये मिडिल सेक्टर का एरिया, हियर वी डू नॉट हैव मेनी डिस्प्यूट्स। एक आध दो टाउन है जहां पर हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हैं, लाइक बाराहोती टाउन एंड लपथाल टाउन। यहां पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये पूरा का पूरा मिडिल सेक्टर पड़ता है। हियर वी डू नॉट हैव much dispute with China. In fact, it is the least disputed of the three sectors. And then third sector which we have with China is you have eastern sector. Eastern sector की भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है। ईस्टर्न सेक्टर की स्टोरी क्या है कि 1913 में दोनों कंट्री के बीच में इनफैक्ट एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ 1913-14 में। उस शिमला कॉन्फ्रेंस it was to be a tripartite conference. Tripartite का क्या मतलब होता है? 3 parties, ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत एंड चाइना। लेकिन अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब तक ब्रिटिश इंडिया ने तिब्बत को कभी भी चाइनीज टेरिटरी, तिब्बत को कभी इंडिपेंडेंट नेशन नहीं माना था। ऑल अलोंग दे मेंटेन देयर पोजीशन दैट तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ सॉवरेन टेरिटरी ऑफ चाइना। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि ब्रिटिश की तरह से ही रशियंस भी एशिया में अपना एम्पायर क्रिएट करना चाहते थे। ब्रिटिश को यह लगता था कि अगर हम तिब्बत को अगर सॉवरेन टेरिटरी हम मान लेते हैं तो तिब्बत रशिया के साथ अग्रीमेंट में एंटर कर जाएगा और फिर वो इंडिया के डोर स्टेप पर खड़ा होगा। सो ऑल अलोंग दे मेंटेन दिस पोजीशन दैट तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना। लेकिन सडनली जब चाइनीज को यह पता चला कि शिमला कॉन्फ्रेंस में तिब्बतन्स भी आए हैं, तो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि भाई आपने तो अब तक all along you have maintained this position that Tibet is a part of China, and suddenly you are saying that Tibet is an independent country which will sign agreement with you, and we are not going to sign this agreement. ब्रिटेन उस समय की hegemonic power थी, so British India went ahead and signed the treaty with Tibet itself, and Chinese they walked out of Shimla conference, and since the delegation of British India was headed by Sir Henry McMahon, and that is why the line that came into existence, it came to be known as McMahon line. The line that came into existence, it came to be known as McMahon line. चाइना मैकमोहन लाइन को इलीगल मानता है क्योंकि चाइना कहता है कि 1914 वाले कन्वेंशन में जो शिमला में हुआ था, चाइना वाज नॉट प्रेजेंट और तिब्बत वो ट्रीटी अपने से साइन नहीं कर सकता था। That it was क्योंकि तिब्बत तो चाइना का पार्ट है, and that is why
there is a problem between the two countries. Now, अक्साई चीन एरिया में लगातार टेंशन होता रहता है, जहां पर हम देखते हैं कि कभी अक्साई चीन एरिया में लद्दाख सेक्टर में होता है, लद्दाख में पैंगोंग त्सो एरिया में होता है टेंशन, कभी डिफरेंट एरियाज में टेंशन होता है, वाटर शेयरिंग इश्यूज भी है दोनों कंट्री के बीच में। ईस्टर्न सेक्टर में क्या वाटर शेयरिंग इश्यू है? इट इज रिलेटेड टू द वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसका 56% वाटर इट फ्लोज इन चाइना and only 44% of waters it flows in India. अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में जो चाइना वाटर रिसीव करता है, दे आर प्लानिंग टू डाइवर्ट ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो फ्यूचर में भी ये इंडिया और चाइना के बीच में एक फ्लैश पॉइंट बना रहेगा स्ट्रगल करने के लिए। स्ट्रगल दोनों के बीच में चलता रहेगा बाउंड्री डिस्प्यूट ब्रह्मपुत्रा इशू पर। तो ये ब्रह्मपुत्रा इशू है क्या दोनों के बीच में, इसको ये समझने की कोशिश कीजिए। हमारे लिए ब्रह्मपुत्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए ब्रह्मपुत्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 6 लाख पीपल इन ब्रह्मपुत्रा वैली लिव्स एंड दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन रिवर ब्रह्मपुत्रा। अगर ब्रह्मपुत्रा के वाटर को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है किसी भी तरीके से, या डैम के थ्रू वाटर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाती है, so it is likely to cause a lot of challenges on Indian side. It may cause siltation problem in the river. One, ये काजीरंगा नेशनल पार्क के इकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा और लोगों की जो लाइवलीहुड इस पर डिपेंडेंट है, that will also get affected. इंडिया के क्या कंसर्न है? इंडिया के कंसर्न है कि अगर मान लिया तुमने जो चाइना ने में यहां पर चाइना फॉर्मली अप्रूव द आउटलाइन ऑफ इट्स 14th 5-year plan 2021 to 2025 which enlightens a number of key strategic projects to be pursued as a priority, जैसे सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन और ब्रह्मपुत्रा पर बहुत सारे डैम्स बनाने की बात चल रही है। अब दिक्कत यह है, ब्रह्मपुत्रा पर केवल डैम वो नहीं बनाना चाहते हैं, वो फ्यूचर में ब्रह्मपुत्रा के वाटर को टनलिंग के जरिए टनल बना करके ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर को दूसरी जगह डाइवर्ट भी करना चाहते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। इससे हिंदुस्तान को प्रॉब्लम है क्योंकि इंडिया को यह बात पता है कि अगर तुम ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर को ट्रांसफर करोगे विच चाइनीज कैन डू, आप पूछेंगे क्या अभी कर सकते हैं? वो कर तो सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट 5 to 7 years में ये टेक्नोलॉजी विल बिकम कंसिडरेबली चीपर। ऑलमोस्ट ये टेक्नोलॉजी जो 2017 में आखिरी टाइम में ये न्यूज में आया था, 2017 में ये टेक्नोलॉजी जितनी महंगी थी उससे 1/10 हो जाएगा अराउंड 2027 के आसपास। एंड देन टनलिंग टेक्नोलॉजी विल बी मच चीपर एंड देन ह्यूज टनलिंग प्रोजेक्ट्स कैन बी अंडरटेकन बाय इंडिया। अगर वो बहुत सारे डैम्स ब्रह्मपुत्रा में बनाते हैं, सो इट मे कॉज अ नंबर ऑफ चैलेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल it will create water hegemony of China. That remember this fact that China is the water superpower of the world. 9 of the largest rivers of Asia are having their headwaters in Tibetan Plateau. So they want to establish their water hegemony, and these dams, it can be used in the future for flooding purpose as well in India, जिसको डिलिबरेटली वो फ्लडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट मे कॉज अ लॉट ऑफ रिस्क फॉर इंडिया। देन 3, दीज ह्यूज प्रोजेक्ट्स मे कॉज सिस्मिक instability in the region because the area is located in highly volatile tectonic zone, because it is particularly around the Great Bend जहां से ब्रह्मपुत्रा इंडिया में इंटर करती है। अगर आपको मैप याद हो, सो ब्रह्मपुत्रा एंटर्स इनटू इंडिया नियर नामचा बारवा। अब क्या है कि जहां से ब्रह्मपुत्रा हिंदुस्तान में एंटर करती है, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ नंबर ऑफ डैम्स देयर। नाउ दिस पर्टिकुलर एरिया इज सिस्मिकली वल्नरेबल and it falls into earthquake prone zone, and it may, due to high volatile tectonic zone, it may cause earthquake in the area also. Dams may cause earthquake in the area, or rather due to dams, if dam burst during these activities will take place. If during earthquake dam burst happens,
then it may cause a widespread devastation in Indian state of Arunachal Pradesh. अगर ये डैम मान लिया बर्स्ट कर जाता है अर्थक्वेक के समय में, अर्थक्वेक के बाद, तो क्या होगा? इट मे कॉज वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन इन इंडिया. एंड देन अनदर प्रॉब्लम इज पोल्यूशन ऑफ द रिवर. रिवर पोल्यूशन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्यों है? क्योंकि डैम अगर बिल्ड होगा so it may cause pollution issue as well, and then there might be effect on the farming as well. कि जहां डैम की वजह से पहला वाटर का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, सिल्ट बढ़ना शुरू होगा, सिल्टेशन प्रॉब्लम इंडियन साइड में बढ़ना शुरू होगा, सॉइल को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा फार्मिंग के लिए. सो इट मे ऑल्सो हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फार्मिंग इन इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अब अगर इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट की हम बात करते हैं, सो नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज दैट वाज साइंड, वो शुरू में है ड्यूरिंग विजिट ऑफ वेन जियाबाओ टू इंडिया. नाउ दीज 3 स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन दैट हैपेंड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ वेन जियाबाओ, it happened during the visit of Wen Jiabao in 2005. Wen Jiabao visited India in 2005, and it was agreed upon that both India and China, they would try to resolve boundary dispute in 3 stages, and those 3 stages are this. 1, agree to guiding principles to be followed. This has already been done. Now, by recognizing boundary and area, both countries are evolving consensus, and hardest negotiation here is going on. At second stage, hardest negotiation is going on. And third stage, demarcation of boundary. तीसरा स्टेज है demarcation of boundary. Now, actual demarcation of boundary, ये तीसरा वाला स्टेज है. But we are still, हम बहुत दूर है एक्चुअल डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री से. वी आर स्टिल स्टक एट द सेकेंड स्टेज. हम अभी तक दूसरे स्टेज पर ही हैं. और मुझे ऐसा लगता है रिसेंटली राम माधव ने भी ये बात कही, यूनियन मिनिस्टर राम माधव, कि इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन माइट टेक अ कपल ऑफ जनरेशन. इट इज नॉट एन इजी बाउंड्री डिस्प्यूट टू बी रिसॉल्व. मुझे ऐसा लगता है कि ये आसान बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं होगा. जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है. इसमें टाइम लगेगा. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन द पार्ट ऑफ बोथ इंडिया एंड चाइना. नाउ बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. नाउ दीज आर द 5 अग्रीमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस. इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. नाउ नेक्स्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, पहले ये समझिए. इन 2013 चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विजिटेड कजाकिस्तान. रिमेंबर दिस, दैट इन 2013 चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग visited Kazakhstan, and he declared he unveiled Belt and Road Initiative of China. Now this Belt and Road Initiative of China, it has got 2 components. One is maritime Silk Route, and second one is land Silk Route. So I have mentioned here that China is looking to rebuild the ancient route through this BRI initiative. जो एंशियंट टाइम में जिस रास्ते का इस्तेमाल लैंड रूट का यूज वो बिजनेस के लिए करते थे, ट्रेड के लिए करते थे, उसी के रिवाइवल के बारे में बात चल रही है. सो इन द फिगर इट हैज बीन मेंशन्ड दैट दिस एंटायर लाइन इट बिलोंग्स टू लैंड सिल्क रूट and this entire line that will connect China's eastern coast with Indian Ocean region and Africa, it belongs to maritime Silk Route.
तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दो कंपोनेंट है, वन इज लैंड सिल्क रूट, सेकेंड वन इज मैरीटाइम सिल्क रूट. नाउ लैंड सिल्क रूट, it will connect China with the rest of Asia and Europe, and Chinese are planning to crisscross entire Asia and Europe through a networks of roads, railways, power stations and pipelines. They are trying to crisscross entire Asia and Europe through a networks of railways, roads, railways, highways, pipelines and power stations. And second, that this entire maritime route, it will connect eastern coast of China, passing through Strait of Malacca, then entire Indian Ocean region, and it will reach to the eastern part of Africa, and through eastern part of Africa, it will also reach to Mediterranean, it will connect with Europe. तो पूरा का पूरा जो लैंड सिल्क रूट है और मैरीटाइम सिल्क रूट है, that will be converging here. This is the entire clear picture of land silk route and maritime silk route. Both land silk route and maritime silk route will be converging in Italy. So I have mentioned here that both maritime silk route will be and land silk route will be converging in Italy, and more than 150 countries are part of China's Belt and Road Initiative, that they will be converging from Chinese coast to Italian hub of Trieste. In fact, Venice and Trieste will be the convergence point. So land or maritime silk route, both will connect. Entire Asia and Europe will be connected, and through maritime silk route, Europe, Asia and eastern part of Africa will be connected. This project will firmly establish China as the epicenter of global economics and politics. Now you must be wondering that what is the intent of China's Belt and Road Initiative? That remember, intent means what? Those unofficial irada, unofficial objectives. First objective, experts are of the view that first objective is obviously to turn China into the epicenter of global economics and politics. Point number two, that through their Belt and Road Initiative, they want to replace United States of America from the leadership position. Belt and Road Initiative के through, they want to replace United States of America from the position of number one power of the world. दूसरा उनका इंटेंशन, इरादा लगता है. तीसरा उनका इरादा लगता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए दे वांट टू चैलेंज डॉलर हेजेमनी. जो डॉलर इज द मोस्ट प्रेफर्ड करेंसी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टुडे, इस हेजेमनी को उनको खत्म करना है. इस हेजेमनी को कैसे खत्म करेंगे? दैट मोर देन 150 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ओनली टू करेंसीज इन दोज कंट्रीज विल बी यूज्ड, इधर लोकल करेंसी और चाइनीज रेनमिनबी. अब लंबे समय तक अगर चाइनीज रेनमिनबी यूज होता है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि चाइना की ब्रांडिंग बहुत अलग तरीके की बननी शुरू हो जाएगी ब्रांडिंग, और वो जो ब्रांडिंग होगी ना, दैट विल मेक चाइना अब लिटरली वर्ल्ड क्लास कंट्री. तो प्लानिंग उनकी क्या है? प्लानिंग उनकी है कि वो 100th ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 2049. 100 साल हो जाएगा. 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आया था. 100 साल बाद 2049 में उनकी ये प्लानिंग है कि वो पूरे के पूरे चाइना को एक मॉडर्न सोशलिस्ट कंट्री के तौर पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और ग्लोबल पावर के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि क्या ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इतनी आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगा? नो प्रोजेक्ट ऑफ द स्केल ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल सो इजीली. ऑलवेज रिमेंबर, it will always remain a difficult task. ये हमेशा एक difficult task रहेगा. कोई भी प्रोजेक्ट जो इस स्केल का होगा वो इतनी आसानी से सक्सेसफुल नहीं होगा और नहीं उसके एडवर्सरीज उसको होने देंगे. Proposed investment in Belt and Road Initiative is $2 trillion. $950 billion तो अभी तक लग चुका है. But Morgan Stanley says that this number in future can go as high as
13 to 14 trillion dollars. Though I'm firmly of this view that if this Belt and Road Initiative will be even a 50% success, it will firmly establish China as the most important country of the world. लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं होगा तो ये चाइना के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि ढेरों व्हाइट एलिफेंट्स उन्होंने खड़े किए हैं डेट लेकर के। कई कंट्रीज में उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिनकी कोई कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है। दोज कंट्रीज हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड कि भाई हम लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, आप इन प्रोजेक्ट को चला लीजिए। अब सपोज आपने एक जगह पे 1000 किलोमीटर का लंबा हाईवे बनाया है जो $2 बिलियन लगा करके बना है, और अभी वो हाईवे आपको चलाना है और वो कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप बहुत मुश्किल है दूसरी कंट्री में जाकर के वो हाईवे चला पाएंगे। इट इज नॉट एन इजी टास्क। और ऐसे ढेरों प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के जो एकदम व्हाइट एलिफेंट के तौर पर हैं, तो इसीलिए चैलेंजेस तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सामने होना है। और फाइनली एक थर्ड आइस सिल्क रूट है। रिमेंबर, आइस सिल्क रूट और आइस सिल्क रोड, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसको पोलर सिल्क रूट भी बोलते हैं। क्यों इसको पोलर सिल्क रूट बोलते हैं? बिकॉज इट पासेस थ्रू Arctic region. So I have mentioned here that Russia and China are reported to have agreed to jointly construct ice silk road along the northern sea route. Russia and China along the northern sea route in the Arctic, along a maritime route within Russian territorial waters. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है? Easier said than done. इस पोलर सिल्क रूट को या आइस सिल्क रूट को, इट इज ऑल्सो नोन एज, रिमेंबर, पोलर सिल्क रूट। क्यों पोलर सिल्क रूट की बात होनी शुरू हो गई है? पोलर सिल्क रूट की इसलिए बात हो रही है कि चाइना भी अपने ट्रेड रूट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। आर्कटिक में भी आइस मेल्ट हो रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि क्या एक नया रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल है। अगर तुम ये आइस सिल्क रोड बनाओगे ना, या जो पोलर सिल्क रूट में बोल रहा हूं, तो वहां कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। जैसे जो मौसम है वो बहुत इनहॉस्पिटेबल होता है। इनहॉस्पिटेबल होने की वजह से हर शिप के पास आपको बेसिकली वो आइस क्लास्ड शिप रखने होंगे। हर शिप के साथ आपको आइस क्लास्ड एक शिप रखने होंगे। अगर वो आइस क्लास नहीं है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। पहला, उसको आइस क्लास होना होगा, मतलब बेसिकली आइस ब्रेकिंग एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वहां वाटर बहुत डीप नहीं है, तो हाई टनेज वाले शिप्स वहां कैरी करना बहुत मुश्किल है। और तीसरा, ऐसे किसी भी एरिया में जहां इतना इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, इट बिकम्स कमर्शियली अनवायबल फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज टू गेट इन्वॉल्व्ड। इंश्योरेंस इंडस्ट्री वहां पर डेवलप नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इस पोलर सिल्क रूट को डेवलप करना will be a challenging task for China. Now, the BRI reform is a central component of Xi Jinping's major country diplomacy strategy, and project has a target completion date of 2049, जो coincide करता है, जैसा मैंने आपसे कहा, the centennial years of centenary years of the establishment of People's Republic of China. क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा? देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर सक्सेसफुल होता है, सो दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू फर्मली एस्टैब्लिश चाइना इनटू द लीग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ नेक्स्ट, इंडियाज कंसर्न्स फॉर बीआरआई। इंडिया का क्या क्या कंसर्न है बीआरआई को लेकर? पहला कंसर्न है इंडिया का अबाउट दिस व्हाट यू कॉल चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। India is of the view that by using Belt and Road Initiative project, it is trying to encircle India in Indian Ocean region. It is trying to encircle India in its own backyard. That remains the first challenge. So I mentioned here that China is building ports in Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh and a number of other places. And now the planning is to encircle India in its own backyard. So first concern for India. दूसरा concern क्या है? इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के पास उनका ग्रेटर प्रेजेंस होना है। दैट रिमेन्स अनदर कंसर्न फॉर इंडिया। फर्स्ट कंसर्न इज चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी।
Now third concern is lack of consultation and lack of transparency. Fourth, कि उन्होंने किसी से कोई कंसल्टेशन भी नहीं लिया है बिफोर लॉन्चिंग ऑफ बीआरआई, और दूसरा ट्रांसपेरेंसी इशू है जिसको लगातार इंडिया बोलता है दैट स्मॉलर नेशंस विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ डेट रीपेमेंट, एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग, कि जो स्मॉलर नेशंस हैं वो डेट रीपेमेंट का इशू आज के डेट में फेस कर रहे हैं. जो मैंने आपसे कहा दैट अ नंबर ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स हैव बीन क्रिएटेड बाय चाइनीज कंपनीज एंड दोज कंट्रीज हैव सिंपली सरेंडर्ड दैट वी आर अनेबल टू repay your debt. Now what to do? तो वो कह रहे हैं चाइनीज कंपनी से कि आप खुद ही चला लो इस प्रोजेक्ट को. अब मान लिया ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएं, देन चाइना विल हैव प्रॉब्लम. तो सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा. नाउ इंडियाज इनिशिएटिव टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. इंडिया का एक इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट मौसम, दैट वाज स्टार्टेड बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर in 2013, Ministry of Culture. In 2013, this project Mausam is to reconnect and re-establish communication links between countries of Indian Ocean and improving their cultural views and improving their cultural values. Now, second one is Sagar Mala project. This is port-led direct and indirect development project with a focus on infrastructure and connectivity. And third one is the Chabahar port. Now development of Chabahar port by India in Iran. Now another Indian initiative is the revival of ancient spice route. You can add this point. Revival of ancient spice route. And India has also been constructing spice route and construction of a series of maritime and construction of a series of maritime and commercial facilities. Facilities in Indian Ocean region. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक पोर्ट डेवलप कर रहा है इन श्रीलंका, त्रिनकोमाली पोर्ट. इंडिया इंडोनेशिया में एक पोर्ट डेवलप कर रहा है तबांग. इंडिया ओमान में एक पोर्ट डेवलप कर रहा है दुक्म. These are the commercial and military facilities developed by India in Indian Ocean region to counter China's string of pearls policy. Then you have India and Pakistan relations. Now, India and Pakistan relations, let me tell you that in the last 7 years since Pathankot and Uri attack, Pathankot happened in December 2015 and Uri happened around March of 2016. Since Pathankot and Uri attack, no talks between India and Pakistan has taken place so far. And what I personally feel that in the next couple of years, it will be very difficult. Next couple of years में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी टॉक होना किसी भी इशू पर will be a very challenging task because of the kind of bitterness and acrimony that exists between the two countries. So, background. दोनों कंट्री के बीच में relationship obviously after partition of India, it has remained a bitter relationship. Both countries were having composite dialogue process and still Mumbai terror attack happened. And then still terrorism related issues kept on happening between the two countries. Now relationship between the two countries, it has reached to the lowest ebb. अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो बॉर्डर कितनी जगह पर है.
थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज विद पाकिस्तान. वन इज first one is line of international border, which is also known as Radcliffe line. It is international border which is also known as Radcliffe line. It runs from Gujarat to some district of Jammu. Now second one is line of control. Line of control throughout Jammu and Kashmir and portion of Leh. And third one is actual ground position line. Actual ground position line क्या है उसको थोड़ा समझिए डिटेल में. Do we have a map here? No. इसको यहां समझिए आप इस मैप पर. Actual ground position line. That line of control between India and Pakistan, it ends at a point coordinate NJ9842. Line of control between India and Pakistan, it ends at a point coordinate NJ9842. And beyond this point coordinate NJ9842, दोनों देशों के बीच में बाउंड्री इज इम्प्रॉपरली डिफाइंड. दोनों देश अपने हिसाब से बाउंड्री को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट NJ9842 के बाद. जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल अगर ये है तो ये एंड होता है मान लिया इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नाम है अगर NJ9842. इस पॉइंट के बियॉन्ड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज इम्प्रॉपरली डिफाइंड एंड बोथ कंट्रीज इंटरप्रेट बाउंड्री एज पर देयर ओन कन्वीनियंस. अब मान लिया यहां पर कहीं सियाचिन ग्लेशियर है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये एरिया पाकिस्तान का है और ये इंडिया का है, और पॉइंट NJ9842 के बाद बोथ कंट्रीज दे इंटरप्रेट बाउंड्री एज पर देयर ओन कन्वीनियंस. इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का कहना है that boundaries shall be drawn horizontally to meet Karakoram mountain. here है Karakoram mountain. अगर पाकिस्तान की बात मान ली जाए तो ऊपर का पूरा एरिया इंक्लूडिंग सियाचिन ग्लेशियर would become part of Pakistan. But India says that no. Why to draw boundary from NJ9842 to meet Karakoram range, Karakoram mountain? Rather, draw boundary perpendicularly to meet Indira Col here. To meet Indira Col. अगर इंडिया की बात मान ली जाए तो फिर राइट हैंड साइड का पूरा एरिया इंक्लूडिंग सियाचिन ग्लेशियर would become part of India. Now this is third type of boundary which I have mentioned here, actual ground position line. Now this is what is actual ground position line. This is what is actual ground position line. It is 110 kilometers long. It is an imaginary line, and both India and Pakistan want India wants authentication of this line. It is an imaginary line. It does not exist in reality. लेकिन इंडिया कहता है कि हम इसी लाइन को एक्चुअल लाइन मानते हैं और हम इसी लाइन का ऑथेंटिकेशन चाहते हैं. सो दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ लाइन जो सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया का पार्ट बना देगा. In 1984, India went for a military operation which is known as Operation Meghdoot, and major part of Siachen Glacier became part of India. Now, India and Pakistan border. India and Pakistan border pe we have a number of challenges. We have challenges like the issue of fake Indian currency notes, money laundering issues in bordering areas is also very rampant between the two countries, especially in Punjab. In some districts of Punjab, Hawala networks is also present. Safe haven for terrorist and secessionist elements are also there. And then we have Indus River water issue between the two countries, and along with that a number of illegal activities on Indo-Pakistan boundary can be seen. Moreover, people living in bordering areas, they are also subjected to propaganda by Pakistan. Those people who are living in bordering areas, they are also subjected to propaganda by Pakistan to sway their loyalties. बॉर्डरिंग एरियाज में रहने वाले लोगों को अपने प्रोपेगेंडा के जरिए उसकी लॉयल्टी को अपने फेवर में पाकिस्तान लेना चाहता है. सो challenges along the border. We have issue of boundary dispute. Obviously,
like Sar Creek and Kashmir. Then river water sharing issue of Indus water, Indus river, ये अभी दोबारा से न्यूज में था. Then cross border infiltration and cross border terrorism, that is another issue between the two countries. And we have a number of challenges on Indo-Pakistan border. So recently a number of steps to lock Indo-Pak border have been taken by government of India. Later on we will discuss about those things. Then we have diverse terrain. That Indo-Pakistan boundary, it passes through diverse terrain like snow-clad mountain, like deserts, or this swamp. A number of challenges are there. Even agricultural fields in Punjab areas. So a number of challenges are there in the management of Indo-Pak boundary. That is why we have the issue of smuggling of fake Indian currency, arms trafficking, drug trafficking, etc. Then another issue, water dispute, Indus Water Treaty. That remember that Indus Water Treaty is the only major water treaty that has so far been successfully signed between the two countries. पूरे वर्ल्ड में आपको ऐसा मैग्नानिमस एग्जाम्पल नहीं मिलेगा वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट का that has been signed between the two countries, and this particular treaty was brokered by World Bank, and United States of America made a mediation. Under this treaty, all the eastern flowing river were given to India. BRS, Bias, Satluj, Ravi, and all the western flowing rivers were given to Pakistan. Indus, Chenab and Jhelum. Remember this, that all the eastern flowing rivers were given to India. BRS, Bias, Ravi and Satluj, and all the western flowing rivers were given to Pakistan. That is Indus, Chenab and Jhelum. And then I have mentioned that Indus Water Treaty marks its 60th anniversary on 19 September 2020. Pakistan has raised a number of objections for construction of a number of dams, citing the dam is in the violation of Indus Water Treaty. A number of such dams are there. मतलब अगर आप देखेंगे ना तो किशन गंगा प्रोजेक्ट है, बगलियार डैम है, नंबर ऑफ सच प्रोजेक्ट्स आर देयर, सलाल डैम है. सारे ही डैम पर पाकिस्तान बोलता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है. तो बेसिकली इंडिया गलती तो देखिए कर चुका है इंडस वाटर ट्रीटी साइन करके. देयर वाज नो पॉइंट इन गिविंग इन साइनिंग एन अग्रीमेंट विद पाकिस्तान, इन साइनिंग अ ट्रीटी विद पाकिस्तान. नाउ इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू बैक ट्रैक. आज के डेट में हिंदुस्तान केवल उसको जो वाटर यूटिलाइज करना है वो यूटिलाइज कर सकता है थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. ट्रीटी को स्क्रैप करना इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज देन इंडिया वुड बी इनवाइटिंग इंटरनेशनल कंडेमनेशन. और फिर चाइना भी ऐसा स्टेप ले सकता है फ्यूचर में इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जिनका हेड वाटर तिब्बतन प्लेटू में है. तो इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया को साइन करना ही नहीं था. अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया का क्या स्टेप्स होता है. नाउ करतारपुर कॉरिडोर. नाउ टू फैसिलिटेट पिलग्रिम्स टू विजिट गुरुद्वारा दरबार साहिब. Darbar Sahib in Kartarpur, Pakistan was signed in 2019, and visa-free travel of Indian pilgrims as well as overseas citizen of India card holders from India to the Holy Gurudwara in Pakistan. इस करतारपुर कॉरिडोर के खुलने के बाद से खालिस्तान मूवमेंट का चैलेंज हम देख रहे हैं लगातार हमारे पंजाब प्रोविंस में. So Kashmir issue, अगर आप, I'm not going to go into the history of Kashmir issue, but remember that it is one of the most sensitive issues. Stephen P. Cohen says that it is the most problematic area, one of the most problematic areas of the world. It is not a simple territorial dispute involving two countries. Problem of perception is there, problem of trust is there, problem of cultural clash is there. Even religion is involved there, and presence of vested interest in South Asia, presence of external powers in South Asia like US and China. US और चाइना का प्रेजेंस ने कश्मीर मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है. अब कैसा है कि
स्टीफन पी कोहेन का कहना है कि कश्मीर की वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट कश्मीर हैज बिकम द फ्लैश पॉइंट फॉर फ्यूचर न्यूक्लियर स्ट्रगल बिटवीन द टू एशियन जायंट्स। केवल इसी की वजह से ये क्वाइट पॉसिबल है कि दोनों एशियन जायंट्स के बीच में फ्यूचर में कंफ्लिक्ट हो सकता है। एंड देन यू हैव द इशू ऑफ पुलवामा। I'm not going here into the history of Kashmir dispute. Now, recent steps taken by Government of India. After Pathankot and Uri attack, Government of India decided to lock its entire western boundary with Pakistan, which is known as Comprehensive Integrated Border Management System, under which 5-layered security would be provided. 5-layered security would be provided so that if terrorists they pass one layer of security successfully, they would come under the radar of security forces through second or third or maybe fourth layer of security, under which CCTV cameras will be installed throughout the boundary, night vision cameras and thermal imaging will be installed, third, underground sensors will be installed, fourth, a radar system will be employed, and fifth, laser barriers will be employed in mountainous and riverine areas. So India's former Home Minister Rajnath Singh said that India is going to completely lock its western boundary with Pakistan in future. So perhaps by the end of 2022, though news has not come out so far, India has completely locked its western boundary with Pakistan, and India has fully implemented comprehensive integrated border management system on Indo-Pak border, perhaps. So, and then we have major wars fought between the two countries. So we have War of 1947, then United Nations Security Council resolution on Kashmir was passed, resolution number 47 in 1948, 65 war, 71 war, and then Kargil war of 1999. Now Afghanistan, remember that on paper, अगर आप इंडिया के इस present map को देखेंगे ना, so if we look at India's present map, India shares boundary of 106 kilometer with Afghanistan, present map के हिसाब से. But since that area has been occupied by Pakistan, गिलगित बाल्टिस्तान का area है वो, illegally captured by Pakistan. So on paper only we share boundary with Afghanistan, otherwise we do not share boundary with Afghanistan. In reality, on paper though we share boundary with Afghanistan. So what type of relationship we had with Afghanistan in the past? That we had a wonderful relationship with Afghanistan after India's independence. In fact, there is a great amount of goodwill existing between India and Pakistan, India and Afghanistan always. अब यहाँ पर अफगानिस्तान के सामने दो इशू था. पहला इशू इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में क्या था? अगर आप रादर पहले हिस्ट्री की बात अगर आप करेंगे, so it goes back to ancient period. In fact, it goes back to ancient period because of spread of Buddhism also. So traces of Buddhism. Ancient time में इंडियन कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था अफगानिस्तान. उसके बाद बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ. बामियान बुद्धा, जो बामियान में द स्टैचू वाज ब्रोकन इनटू पीसेस बाय तालिबान फाइटर्स वे बैक अराउंड इन आई थिंक 1997-98. तो वो बुद्धिज्म वाला लिंक भी हुआ करता था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में. एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टेड बिटवीन द टू कंट्रीज. अब क्या था कि इंडिया के फ्रीडम के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो उस समय डूरन लाइन का एक इशू था उनका पाकिस्तान के साथ, जो अभी भी तालिबान और पाकिस्तान के साथ चल रहा है. ये डूरन लाइन वाज अ लाइन दैट वाज ड्रॉन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान. रिमेंबर, द डूरन लाइन वाज अ लाइन दैट वाज ड्रॉन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान. दिस डूरन लाइन, British India and Afghanistan. Now, this Duran line, after India's independence, Afghanistan refused to accept Duran line. Some experts, they are of the view that India should have supported Afghanistan on the issue of Duran line. आप कहेंगे सर वो इलीगल होता.
दिस इज नॉट द वे दैट फॉरेन पॉलिसी वर्क्स. वो इलीगल होता या नहीं होता, कौटिल्य सेज दैट योर इमीडिएट नेबर्स नेबर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड. पाकिस्तान को चेक में रखने के लिए अफगानिस्तान से फ्रेंडशिप वाज नेसेसरी. जरूरी था कि पाकिस्तान को चेक में रखने के लिए अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडशिप किया जाए. And then relationship between India and Afghanistan in the recent past, the relationship has got further strengthened. ये relationship के को strengthen होने की शुरुआत कब हुई थी? Strengthen होने की शुरुआत हुई थी in 2001 when Taliban's were replaced by Hamid Karzai's government, and then India entered into India entered for the reconstruction of Afghanistan. So both countries, they signed a strategic partnership for rebuilding infrastructure in Afghanistan, institutions, education, capacity building, and for encouraging investment in Afghanistan's natural resources. So India made a long-term commitment for the development of Afghanistan. Once Americans entered into the scene and Taliban regime was toppled in 2001 and Hamid Karzai became president of Afghanistan. There is an interesting fact about Hamid Karzai, that Mr. Karzai, he got schooled at one of the schools in Shimla. So he has a very close relationship with India. He fondly remembers his stay in India. So during the regime of Ashraf Ghani and Hamid Karzai, India had very close ties with Afghanistan, and India in fact invested more than $3 billion for reconstruction in Afghanistan, more than $3 billion. But once Taliban has come back to power, now relationship between India and Afghanistan has again stalled. I won't call it deterioration in bilateral ties, but लगभग रुक सी गई हैं चीजें. So I have mentioned here that now this commercial relationship between India and Afghanistan, it improved, but since August 2021, now relationship between India and Afghanistan लगभग रुक सा गया है. 2021 में जब से तालिबान वापस आए हैं, यूएस ने डिक्लेयर किया था that they are moving out of Afghanistan on 31st of August 2021. And Taliban went on to capture Kabul on 16th of August itself. वो काबुल में 16th of August तक पहुंच गए थे. उसके बाद से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि लगभग कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ. इनफैक्ट सब कुछ रुक सा गया है. All the Indian personnel, Indian workers, everybody came out of Afghanistan. तो लगातार तालिबान भी they are making an outreach to India that you come here and you complete those infrastructure project. We will provide you all types of security. Lekin so far, Indians have not been able to trust Taliban's government in Afghanistan. So there has been considerable interest in the cultural exchange, but as I told you that with the Taliban coming back to power, now relationship between India and Afghanistan, it has got completely stalled, and nothing substantial is taking place between the two countries. Now, next one is that these are the programs launched by India. जब आप अफगानिस्तान के लिए अपने से नोट्स बनाएंगे, so you can add these points that India has invested significantly. India has invested in the capacity building of Afghanistan. Projects like 𝐏𝐿𝐻𝐒, I have mentioned here that projects like 𝐏𝐿𝐻𝐒 to Kabul, electricity transmission lines, that was also started by India. That India also provided in 2020 75,000 metric ton of wheat to Afghanistan as a humanitarian aid. लेकिन अभी के टाइम में कैसा है, once Taliban has come back to power, हमारा जो रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ था ना, जो हमीद करजाई और अशरफ घनी के समय में था, लगभग वो चीजें खत्म हो गई है. और हमारा रिलेशनशिप इज टुडे मेनली ऑफ प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान. आप बोलेंगे कि सर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा क्यों नहीं डीप हो रहा है जैसे था. उसके पीछे रीजन ये है दैट परहैप्स इंडिया इज नॉट श्योर
about what is going to happen in Afghanistan. क्योंकि अफगानिस्तान में दोबारा से सिविल वॉर का सिचुएशन आ रहा है, तालिबान्स के बीच में इनफाइटिंग स्टार्ट हो गई है. सिराजुद्दीन हक्कानी, which is who is backed by Haqqani group, is backed by Pakistan, and Kandahar-based Talibans, they are at loggerheads with each others. That is why almost a week back, Haqqanis, they severely criticized Supreme Leader Akhundzada in Afghanistan, क्योंकि वहां पे खुद ही इनफाइटिंग शुरू हो गया है. So not only India but even international community is quite unsure about Afghanistan. That is why India's interaction with Afghanistan once Taliban took over in August 2021 has been limited to providing humanitarian aid only. That's it. यही इंडिया का relationship रहा है. That all these points, they were there, but before Taliban's coming back to power. Once they have come back to power, now so many things between India and Afghanistan have got changed. That is why I told you that basically India is following a policy of wait and watch today. Not only India but also international community is following a policy of wait and watch. वो अभी कोई भी ऐसी पॉलिसी चला ही नहीं रहा है, हर कोई वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी ही अभी देख रहा है अफगानिस्तान में कि अफगानिस्तान में होना क्या है. और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी लगातार टेंशन बढ़ रहा है. कई सारे ऐसे बॉर्डरिंग पॉइंट थे जहां पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आने वाले ट्रक्स को रोक दिया है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आने वाले ट्रक्स को रोक दिया है, बिकॉज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन ऑन ड्यूरल लाइन. तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अगले 2-3 सालों में अफगानिस्तान में क्या होता है. आई एम ऑफ द व्यू दैट वंस अगेन सिविल वॉर लाइक सिचुएशन विल इमर्ज. In fact, there are multiple parties in Afghanistan which want a civil war like situation. So it will be very interesting to see Afghanistan's development in coming years. So what is going to happen? ये जो भी projects हैं, those projects were there, but those projects were there before Taliban's taking over Afghanistan. Now Afghanistan is important for India. अफगानिस्तान का पहला इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए दैट अफगानिस्तान स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इट इज जियो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड. लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान मेक्स इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया. सो दिस लोकेशन, it makes Afghanistan an extremely important country for India. Now, Afghanistan also serves for India's security and economic interest. American Geological Survey says that $1 trillion worth of mineral reserves is there in Afghanistan. But again, बात वही है कि तालिबान के रूल में ये सारी चीजें थम सी गई है. कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए और जाने के लिए तैयार नहीं है. एंड देन obviously India has a large and influential Afghan diaspora and has invested in the country's reconstruction. So tremendous amount of goodwill in favor of India. Tremendous amount of goodwill in favor of India. In favor of India can be seen. Tremendous amount of goodwill in favor of India can be seen. And then Afghanistan is important for India. So Afghanistan is tied to India's vision of being a regional leader. But again, ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, it is not happening right now. Everything is into a state of flux today because of Taliban's dominance over Afghanistan, dominance in Afghanistan. So they have become the political master of Afghanistan once again, almost after 20 years. So it will be very interesting for India to see how things unfold in Afghanistan in coming decades. Now, Indian investment in Afghanistan, Zarang to Dilaram Road. Now, this particular Dilaram-Zarang highway, it connects Afghanistan to Chabahar port. Remember, it connects
अफगानिस्तान टू चाबहार पोर्ट, आप बोलेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये दिलाराम जरंग हाईवे अफगानिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर टू चाबहार, पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंस खत्म करेगा या कम करेगा। अभी उनको केवल एक पोर्ट तक एक्सेस है, दैट इज कराची पोर्ट था, but after Dilaram Zarang highway now they have got access to Chabahar port as well. Now this Friendship Dam or Salma Dam that was also constructed by India, this is also known as Friendship Dam, this is also known as Friendship Dam in Herat province of Afghanistan, Friendship Dam. And Afghanistan parliamentary building that has also been constructed by India. Transmission line from 𝐏𝐿𝐾𝐒 to Kabul. India was also constructing a particular drinking water project in Kabul. हालांकि वो प्रोजेक्ट अभी बंद हो गया है when Taliban took over Afghanistan. लेकिन वो प्रोजेक्ट था काबुल के लोगों को पानी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। एंड these are some of the India's projects like providing wheat, construction of parliamentary building, and 𝐏𝐿𝐾𝐒 to Kabul project line at a cost of $120 million, Salma power project, food assistance, all these projects have been done. लेकिन ये याद रखने वाली बात है और इंटरेस्टिंग बात है that all these projects today have got stalled. Why all these projects today have got stalled? Because of Taliban's control over Afghanistan, and international community is also quite unsure. And then a number of these projects are there, like Women's Vocational Training Center, Baghe Janana for training of Afghan women, women in garment making, nursery plantation, then food processing marketing. But again, all these things have got reversed today. आज के डेट में दोबारा से women अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती है. So a lot of works were done for women empowerment in Afghanistan, not only by India but also by international community. But all those things today have got reversed. So it is in a situation of mess today. Again फिर से दोबारा से शुरुआत में उन्होंने कहा, जब अगस्त में they controlled Afghanistan, तो उन्होंने कहा कि नहीं, विमेन का एजुकेशन हम नहीं रोकेंगे। तो शुरू में उन्होंने कहा कि गर्ल्स और बॉयज अलग अलग क्लास में बैठेंगे। फिर उन्होंने थोड़े दिन के बाद कहा कि गर्ल्स स्कूल नहीं आएंगी, कॉलेज नहीं आएंगी, और अब तो ऐसा कंडीशन हो गया है कि गर्ल्स वहां शायद मेल के साथ ही घर से बाहर निकल सकती हैं, अकेले दोबारा से नहीं निकल सकती हैं। सो अगेन जो भी डेवलपमेंट हुआ था ना 20 ईयर्स में विथ रिस्पेक्ट टू विमेन डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, सब खत्म हो चुका है अफगानिस्तान में। इंटरनेशनल कम्युनिटी का सारा कंसर्न ही इस चीज को लेकर था कि विमेन राइट्स का क्या होगा, सिविलियन राइट्स का क्या होगा। ये जो 20 साल में डेवलपमेंट हुआ है, क्या वो सारा का सारा डेवलपमेंट रिवर्स हो जाएगा? और वो सब रिवर्स हो चुका है। अभी तो उनके पास वेपन्स भी बहुत हो गए हैं, उनको सारे वेपन्स वही अमेरिकन वेपन्स मिले हैं जो मिल रहे थे। एंड देन अफगान पीस प्रोसेस by Biden administration, it includes establishment of a single transition government between warring parties and UN-led multilateral conference of ambassadors from India, China, Iran, Pakistan, Russia and the US. India has supported this UN-led process. So these are going on with respect to stability in Afghanistan. But again, as I told you, that problems will remain in Afghanistan. जो मैंने आपको सारे प्रोजेक्ट विमेन से रिलेटेड बताए, none of those projects are successful today, na? That again women have been confined within the four walls of their houses. उनको केवल डोमेस्टिक चोर्स करने हैं वहां पर, तो विमेन का अगेन वहां पर रोल बड़ा कम हो गया है। और मुझे लगता है ये सिचुएशन अभी चलेगा, इट इज नॉट गोइंग टू रिवर्स सून। सो नाउ this I have mentioned about the peace talks, here. Now India and Sri Lanka, a relationship between India and Sri Lanka, it goes back to, it is almost 2500 years old. Not only because of Buddhism, but relationship between India and Sri Lanka it goes back to time immemorial. In fact,
King Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra for a spread of Buddhism to Sri Lanka. बुद्धिज्म को स्प्रेड करवाने के लिए भेजा था. And then I mentioned here that this cultural relationship, it is 2500 years old and it has significantly developed in recent times. Now, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं रिसेंट टाइम में, सो बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री, दैट civil war like situation happened in Sri Lanka, which is also known as Ilam War, and it came to Ilam War between Sri Lankan forces and LTT in May 2009. And during the course of conflict, India supported Sri Lankan government and India's position remained there. But again, once the war ended in 2009, Ilam War ended in 2009, that India entered into the scene and India requested Sri Lanka to implement the provisions of India-Sri Lanka Accord. Now this India-Sri Lanka Accord was the result of Rajiv Gandhi and Jayawardene meeting in 1987. That was a bilateral agreement between India and Sri Lanka, जिसमें यह कहा गया कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है एथनिक माइनॉरिटी का, तमिलियंस का श्रीलंका में, उनके डिमांड्स और राइट्स को रीस्टोर किया जाए और नॉर्थ ईस्ट प्रोविंशियल काउंसिल बनाई जाए विच विल हैव सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी ओवर लोकल अफेयर्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस इन श्रीलंका टू मॉनिटर द सीज फायर. लेकिन हुआ इसका बड़ा उल्टा. अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इस पीस अकॉर्ड का पर्पस था किसी तरीके से तमिलियंस और इंडियंस को कन्फ्लिक्ट करवाना. इस पर एक बड़ी अच्छी मूवी बनी है जिसमें जॉन अब्राहम है, मद्रास कैफे, कि किस तरीके से श्रीलंकन फोर्सेस ये कंडीशन क्रिएट करती हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिफरेंसेस इंडिया और तमिलियंस के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करवाई जाएं. और देन एज पर दिस अकॉर्ड उनको ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलना था, वहां एक हाई कोर्ट का भी एस्टैब्लिशमेंट होना था. बट दिस अकॉर्ड ऑल्सो फेल्ड टू ब्रिंग लास्टिंग सोल्यूशन एंड पीस इन द कंट्री. एंड यू वुड बी अमेज्ड टू नो that this accord, it came into existence in 1987 between India and Sri Lanka, but so far the provisions of this accord in favor of Tamilian people have not been implemented by Sri Lankan government. Now, importance of Sri Lanka for India, obviously one important thing is that geostrategic location of Sri Lanka for India. हिंदुस्तान के लिए जो geostrategic location है श्रीलंका का, that it is at the crossroad of major international sea route in Indian Ocean region and it is of a great importance to India. कि basically श्रीलंका में जो ऐसा लोकेशन है श्रीलंका का that you can keep a bird eye view over entire Indian Ocean region. That is why when Sri Lanka gave the contract to construct Hambantota port to China, it was a cause of concern for India. लेकिन उसके बाद श्रीलंका ने इंडिया को भी त्रिनकोमाली पोर्ट दिया, which I made you write in Sino-Indian relations. So cultural and historical ties. The relationship, as I told you, it goes back to almost 2500. It is 2500 years old because of many things. And then Tamilian population. That sizable Tamilian population live in Sri Lanka, and they have very close cultural ties with India. Intermarriage is very frequent between males and females of Indian side of Tamil Nadu and northernmost provinces of Sri Lanka. And then maritime boundary agreement, which has already been signed between the two countries. And they have significant for the Indian Navy to protect its trade route and Sri Lankan Navy to protect its exclusive economic zone. And both India and Sri Lanka, they also have economic interest. Both have also signed free trade area agreement with each others, and they also have security interest with each others. That stability, Sri Lanka's stability and security are important for India. Why? Because Sri Lanka shares maritime boundary with India. That is why recently when Sri Lanka witnessed crisis like situation, तो उस कंडीशन में उस क्राइसिस लाइक सिचुएशन को मैनेज करने के लिए श्रीलंका इंडिया ने so far have given goods worth more than
$3 billion to Sri Lanka to bring stability in Sri Lanka. And the most important thing that this particular gesture of India, it has also been recognized by people of Sri Lanka. That a number of celebrities of Sri Lanka, they have said that India has acted like big brother to Sri Lanka. India has always stood in times of crisis for Sri Lankan people. Now this is a very big gesture of India that was recognized by Sri Lankan people. And then importance of Sri Lanka, मैंने आपसे कहा कि Sri Lanka is an important partner in fight against terrorism. Then you have, and obviously countering China's influence. Now this countering China's influence is important because China has constructed Hambantota port in Sri Lanka. Now this Hambantota port is at the southernmost tip of Sri Lanka. And by holding the control of this southernmost port of Sri Lanka, Chinese can easily keep a bird eye view over entire Indian Ocean region. So to neutralize this port, Sri Lanka has given India the right to develop Trincomalee port. Trincomalee port in southeastern part of Sri Lanka. Southeastern part of Sri Lanka. This port has been given to India. Sri Lanka also allowed India to develop two airports, Matala Airport and Polali Airport. Matala Airport and Polali Airport. Control of these two airports have been given to India. Now next, commercial relations between India and Sri Lanka. So both countries have also signed free trade area agreement with each others. Sri Lanka is among the largest trade partner of India in the SAARC. We have a trade of $3.6 billion with each others. An important trade partner of India in SAARC. We have a trade of $3.6 billion. And Sri Lankan export to India have increased substantially since 2000 when India-Sri Lanka FTA came into force. Remember that we have signed FTA between India and Sri Lanka. Though 60% of Sri Lanka's total export to India comes to India over the past few years because of this particular benefit. यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, one cause of concern for India is the signing of this FTA, and China has also got a free trade area agreement with Sri Lanka with respect to Hambantota port. Now there is a growing concern that by using Hambantota port, they would try to enter Chinese goods. Please close the door. So by signing of this particular ports, यहाँ पर एक concern की बात हिंदुस्तान के लिए ये है, by signing of this FTA, अगर चाइनीज गुड्स हम्बनतोता पोर्ट के थ्रू हिंदुस्तान में एंटर करता है, सो हम्बनतोता पोर्ट माइट बी यूज्ड बाय श्रीलंका, माइट बी यूज्ड बाय चाइना टू फ्लड इंडियन मार्केट्स. तो ये एक कंसर्न रहा है दोनों के बीच में. एंड इंडिया हैज आल्सो बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ FTI. Indo-Sri Lanka Free Trade Area Agreement. I have mentioned here about the provisions of the Free Trade Area Agreement, which was signed in 2000, which provides duty-free concessions to a wide range of products traded between the two countries and other provisions. Now next one is the developmental cooperation between India and Sri Lanka. Developmental cooperation, India is one of the major developmental partners of Sri Lanka, and this partnership has been an important pillar between the two countries. And India has also given grants of $570 million and overall commitment of more than $3.5 billion.
जब इलम वॉर खत्म हुआ था तो उसके बाद जब इंडिया ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया, सो फार इंडिया हैज बिल्ड more than 50,000 houses for displaced, internally displaced Tamilian refugees in Sri Lanka. And that emergency ambulance service and lines of credit has also been provided by India to Sri Lanka. Then next one is cultural relations. So I have already mentioned with you that India's relationship with Sri Lanka is 2500 years old. In fact, King Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghmitra to go to Sri Lanka for spread of Buddhism. So Buddhism has been a vital link between the two countries. That is why both countries have also been collaborating for building International Buddhist University in Sanchi. And a number of other collaborations are being taking place between the two countries with respect to revival of Buddhist linkages between the two countries. So people to people ties, that remains a very strong cultural connect between the two countries that I have mentioned here about Mahendra and Sanghmitra. And this deep people to people connections and shared Buddhist heritage between India and Sri Lanka, it has created the conditions for further deepening of bilateral ties between the two countries. Then I mentioned a couple of facts here, like venerated relics from this Vaska Dubey Vihara have also and then other facts related to cultural cooperation between the two countries. Then you have Swami Vivekananda Center in Sri Lanka and other facts related to Sri Lanka. Then you have Indian community like Sindhis, Boras, Gujaratis and Parsis, Malayalis, Telugu speaking person who have settled down in Sri Lanka, and most of them settled down after partition of India and engaged in various business ventures. And there is a close connection between India and people of Sri Lanka because of their common Tamilian linkages. As I told you that intermarriage is quite frequent between people of Sri Lanka and Indian state of Tamil Nadu. And then defense and security cooperation is also there. These two are important for prelims point of view. India and Sri Lanka conduct joint military Mitra Shakti and naval exercise SLINX and both countries are also cooperating for anti-piracy operations, क्योंकि anti-piracy के लिए Indian Ocean बहुत बदनाम है. अब तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भी पायरेसी के केसेस होने लगे हैं, पहले तो बाकी जगहों पर ही होता था इंडियन ओशन में. So both countries are also cooperating against anti-piracy operations, drug trafficking. श्रीलंका का इस्तेमाल किया जाता है और इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एज अ ट्रांजिट पॉइंट फॉर ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. इस चीज पर भी दोनों कंट्री के बीच में लगातार कोलैबोरेशन चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. एंड देन major challenges between India and Sri Lanka. Major challenges between India and Sri Lanka has been one, fisherman issue. Fisherman issue क्या है? Indian fishermen जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, so to catch fishes, अगर उनको इंडियन साइड में मछलियां नहीं मिलती है, क्योंकि मछुआरे ज्यादा होते हैं इंडियन साइड में, इंडिया का पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो वहां बड़ी तेजी से डीपॉपुलेशन हो जाता है फिशेस का. So they venture out into Sri Lankan waters and then they are being caught by Sri Lankan Navy. Sometimes they have also been fired upon. उन पर गोलियां भी चलाई गई है, उनको अरेस्ट भी किया गया है इंडियन फिशरमैन को. तो ये फिशरमैन वाला इशू दोनों कंट्री के बीच में बड़ा लंबा वो है, जिसके बारे में कुछ सजेशन दिए गए हैं. जैसे एक पाक बे अथॉरिटी बनाई जाए दोनों कंट्री के बीच में, जिससे फिशरमैन के मूवमेंट को रेगुलेट किया जा सके पाक बे अथॉरिटी के थ्रू, जिसमें दोनों कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हों, फिशरमैन कम्युनिटी से लोग हों, दोनों कंट्री के बीच के रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए. चैलेंजेस क्या है? दैट चाइनीज इन्फ्लुएंस हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इन श्रीलंका इन रिसेंट ईयर्स. दैट total Chinese loans to Sri Lanka is in excess of $11 billion. Now again it's a problem. दूसरा दोनों के बीच में इशू है कि जो चाइना ने पोर्ट बिल्ड किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट, वो उसने चिटागोंग बांग्लादेश में किया है, ग्वादर में किया है. रिमेंबर
एंड योक फ्रू म्यांमार में किया है एंड हम्बनतोता में किया है. And purpose of these commercial and military facilities is to encircle India in Indian Ocean region. Obviously commercial purpose हो सकता है, लेकिन इंडिया को भी encircle करना चाहता है, और ये एक बड़ा कंसर्न है हिंदुस्तान के लिए. और चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का एक मेजर कंपोनेंट श्रीलंका है. सो आई हैव मेंशन्ड हियर दैट चाइना's स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स strategy is aimed at encircling India to establish dominance in the Indian Ocean region. That's an important point. That what has been the objective of China's string of pearls policy? To encircle India and to dominate Indian Ocean region. To encircle India and to dominate Indian Ocean region. And then I have mentioned here that India is also planning to build Trincomalee port. Sri Lanka has allowed India to build Trincomalee port in southeastern part of Sri Lanka, to counterweight Hambantota port developed by China. So that's an important fact. And then you have ethnic conflicts that exist in Sri Lanka, the tension that exists in Sri Lanka between majority Sinhalese people, उनको सिंगला भी बोलते हैं, majority Sinhalese and minority mainly Tamilians, and then you have India and Maldives relation. That Maldives is strategically located in Indian Ocean region. As I have mentioned here, that Maldives is strategically located in Indian Ocean region. मालदीव में जिसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगा वो इंडियन ओशन रीजन में फ्यूचर में अगर कभी वॉर का कंडीशन होता है, सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास कम ऑप्शन है. वी हैव लक्षद्वीप हियर, वी हैव अंडमान एंड निकोबार हियर, बट मालदीव इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड. एंड ऑफ लेट चाइनीज हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर प्रेजेंस इन मालदीव. इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 60% of Maldivian debt, 60% of Maldivian debt used to be Chinese money, Chinese debt. So security cooperation between India and Maldives, it goes back to 1988. In fact 1988 में इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस चला करके, और वहाँ मिलिट्री coup आने वाला था जिससे उन्होंने मालदीव को बचाने की कोशिश की थी. इंडिया हैज डन अ लॉट इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड training defense forces and other things, but there are certain things that I have mentioned here about Operation Cactus also, that it was India's prompt assistance during 1988 coup attempt during prime ministership of Rajiv Gandhi. And then I have mentioned here about the recent initiative of President Solih to India. अब यहाँ देखना यह है that President Solih is a friend of India, but President Solih has been a close friend of another Maldivian former president, Nasheed. But a Chinese puppet is also there in Maldives, and that person is 𝐏𝐿𝐴𝐿. 𝐏𝐿𝐴𝐿 is a Chinese puppet. So this is bilateral economic relationship between India and Maldives. That Indian imports from Maldives primarily comprises scrap metals, and Indian export to the Maldives includes a variety of engineering and industrial products like drugs, pharmaceuticals and other things. Now Maldives is also an important part of India's Project Mawsum. It is strategically important for India. It is strategically important for India. Now next, you have bilateral trade figures which I have mentioned here. Bilateral trade figures. Then you have developmental cooperation
between India and Maldives. So I have mentioned here developmental cooperation. Then finally, tourism, that also accounts for a quarter of the GDP of Maldives and indirectly for a much larger proportion of GDP. And more than 1.91 lakh Indian tourists arrived in Maldives, and it was the leading source market for Maldives with a 14.1% market share. So tourism is another important point of cooperation. Reason why Maldives is important for India. As I told you, it is strategically located in Indian Ocean region. So its location, it makes Maldives extremely important for India. Then second, that since China has started sending naval ships to Indian Ocean region, now Maldives is again important for anti-piracy operations, and India is, as the preeminent, I have mentioned here, South Asian power and a net security provider in Indian Ocean region. India needs to cooperate with the Maldives in security and defense sector. Then China's massive economic presence in Maldives is a major concern. As I told you earlier, that at one point of time, Chinese debt to Maldives, it amounted to 60% of the GDP of Maldives. And both share ethnic, linguistic, cultural, religious and commercial ties with each others. And then Indian nationals living in Maldives, education, medical treatment, India is considered a preferred destination for Maldivian people. Now challenges for India and Maldives, that every now and then political instability keeps on happening. As I told you, that one group in Maldives, the group of Solih and Nasheed, they support India. Another group, and Chinese growing influence, another group is there for Chinese, they support China. Now radicalization issue leading to terrorism, that is another cause of concern, because it will have, इसका रिपल इफेक्ट हिंदुस्तान के ऊपर भी दिखेगा, और कुछ टेरिटोरियल वाटर को लेकर के भी इंडिया और मालदीव के बीच में कंसर्न है, दोनों ही कंट्री के बीच में. एंड देन फाइनली you have so Solih's foreign policy expressly roots for India first. यही cause of concern है, ये ध्यान में रखिएगा. Whereas another president, Mohammed Yamin Gayoom, he has a pro-China tilt. जब पिछली बार Mr. Yamin was president of Maldives, so India was almost kicked out of Maldives. इंडिया को लगभग भगा दिया था. And then Solih won the election supported by Nasheed. इंडिया ने सपोर्ट किया, and once again India entered into the scene. तो एंटी इंडिया जो अभी चल रहा है ना, इंडिया आउट कैंपेन इन Maldives, that is purely the brainchild of Yamin Gayoom, and that is why Solih says that we want Indians on our soil. And then you have, so that's about India and Maldives. I have mentioned here the India Out campaign in Maldives, which has been the brainchild of Chinese puppet Yamin Gayoom. Campaign has got louder around key bilateral development like signing off 𝐏𝐇𝐘𝐒 Harbour development deal with India, helping Male to develop Maldivian National Defence Force Coast Guard Harbour, and because of these issues that there is a conflict between India and Maldives. And these are, I have mentioned that former President Abdullah Yamin had joined this campaign of India Out, and the government has rejected this India Out campaign because of Indian influence in the government. So that's all about this India and her neighborhood. India and her neighborhood part 1. Part 2 part 2 video will come in the next video of this series. So that's all about this particular topic. Thank you.